Welcome back to the channel of FB Coaching. So again, I am posting one more video in continuation for the unit content geometry. मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और दे आर हेल्पिंग यू टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट एंड दे आर हेल्पिंग यू फॉर योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स बोर्ड एग्जाम. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. मोर यू सब्सक्राइब चैनल, more you will get the videos in instance regarding the preparation for your exams here on this channel. We're dedicating this channel specifically for the preparation of ICSE exams as such. So now मेरा second video जो था मैंने आपको उसमें explain किया था lines का slope, line का inclination, positive slope, negative slope. I hope you all remember that. videos को line से देखिए, videos को देखकर notes बनाइए, copy में notes लिखिए एंड अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए. मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में सेकंड वीडियो के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. तो दिस इज द प्रैक्टिस वीडियो फॉर द सेकंड वीडियो, फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड वीडियो. दैट इज हाउ वी हैव प्लान द वीडियोज इन दिस मैनर. एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे. सो the video was regarding the slope and inclination. I hope the topic was clear. Still you have doubts, you can always send us. My number is there. You can call me on WhatsApp, send me questions on WhatsApp, send me your doubts on WhatsApp. You can also write your doubts in the comment segment as such. Anyway, so the question here is that I have got the inclination given to us 0 degree or 30 degree or 46 degree and मुझको इन लाइंस के स्लोप फाइंड आउट करने हैं. So the very basic formula for finding slope was m equals to tan theta. That gives you m equals to tan 0. So the value of tan 0 is 0. The slope is 0. Now जैसे ही आपको लाइन का स्लोप 0 दिखाई पड़ता है, सो माई सजेशन दैट आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए. आप लाइन को विजुलाइज करिए कि ये लाइन कैसी होगी प्लेन के ऊपर. ये लाइन एक्सिस एक्स के पैरेलल होगी. ये लाइन का इंटरसेक्शन एक्सिस एक्स से नहीं हो रहा होगा. ये लाइन वाई एक्सिस पर किसी एक पॉइंट से पास ऑन हो रही होगी. इसकी इक्वेशन उस लाइन की इक्वेशन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल है. अगर ये लाइन x के पैरेलल है तो ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है. इतना सब आप जब एक बार सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में हर पार्ट पर, तो लाइन के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आराम से बनते जाएंगे. विजुलाइज करिए, डायग्राम्स बनाइए, रफ डायग्राम बनाइए. डोंट यूज स्केल एंड पेंसिल एवरी टाइम, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट. रफ डायग्राम्स बनाइए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए. द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. m equals to tan 30. Theta equals to 30. You can see the slope is, the inclination is acute, so the slope is m equals to tan 30. M equals to 1 by root 3. Slope is positive. The line is having acute inclination in the anti-clockwise direction. Positive slope is given to us. Now, sometimes children ask these angles like 72 degree 30 minutes is the angle. What is there which we can do with this kind of angle? So I slightly changed the color of this. So I got the angle 72 degrees 30 minutes. Now in the board exam you will be having a table. We're giving a table from the board that from where you can find out the value of tan 72 degree 30 minutes. It might be in points, and I am expecting that you have done by now the trigonometry and you have learned how to find the tables, the value from the table, which includes the angles in minutes and degrees and second as well. So value of this angle in the table gives you the value of slope. So you see here, slope is a real value. Slope is a real number. It's not only 1 upon root 3 or 0 or 1 and 2. It is a continuous number. It can be 1.073. It can be 1.555. It can be 2.3. Whatever. Any number can be there. Negative and positive
real number can be the value of slope. I hope you understand this. The reverse question. You got the value of slope. So that means I have been given that m is equals to 0. Now m is tan theta. Tan theta equals to 0. Tan theta equals to tan 0 degree. Theta equals to 0 degree. I hope it is clear. Next one. Sorry. M equals to root 3. Tan theta equals to root 3. So tan theta equals to tan 60. Theta equals to 60 degree. I hope you understand this all. So here you can see that I have been given the slope. I must learn in my mind those values, like for tan, you must know the value of tan 45, tan 30, tan 60, tan 90, and tan 0. Tan 45 is 1, is 1 by root 3, is root 3, it is undefined, and tan 0 is 0. Please try to learn these values. These values are generally come into role in the questions of slope and inclination. So you must prepare these angles. I don't always remember these small and trivial things always sometime creates a problem for you, and you should be ready for them. So आपके पास सारे angles की value आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बोर्ड एक ऐसा पेपर बना के देता है जो एवरेज बच्चों के लिए बनाया जाता है। आपको इसमें 60 मार्क्स स्कोर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 60, 65 मार्क्स, 68 मार्क्स, द रियल फाइट इज फॉर द रिमेनिंग 12 मार्क्स और 10 मार्क्स, which is very, very important. So you should try first of all to make the base broad, keep these things clear in your mind, study at length, sit down and study at length. ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, solve questions on copy. Don't just read the solution, write the solutions on the copy as well. I've got a line whose endpoints are -2, -3 and 1, 2. And I need to find the slope of this line AB. So the formula for that, y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 minus -3 upon 1 minus 2, 2 plus 3 upon 1 plus 2, 5 upon 3 is the answer for slope of this line. I hope this question is clear. We can write the formula in this manner also. Difference of ordinate upon difference of abscissa. This will also help you to find the slope of the line, such that this formula is very important. This formula is very, very important. Please keep this in your mind. You will be using this formula at many places again and again repeatedly. This will come to play a role into the questions, because we generally get two points passing and we got to find the slope of the line. We use this formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can take any point as x1 y1 and the other point as x2 y2, and this point will gives you the slope. Right. So I'm just taking the very, very basic and easy questions right now. But remember, board always gives sometime the basic conceptual questions. It checks whether आपने वो basic पढ़ाई करी है या नहीं करी है. So I need to find a slope of a line, say L, which is parallel to the given line AB. इसके स्लोप को आप m2 मान लीजिए, इसके स्लोप को आप m1 मान लीजिए, एंड नाउ रिकॉल इन योर माइंड, जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं, m1 equals to m2. तो what will m1 be equals to 6 minus 4
upon 0 plus 2, 2 upon 2, m equals to 1. So the slope of a line, parallel line AB, is also equals to 1. So m1 equals to m2. So m2 is also equals to 1. तो उस लाइन का स्लोप जो कि लाइन AB के पैरेलल है, उसका स्लोप वही होगा जो AB का स्लोप है। तो हमने AB का स्लोप फाइंड आउट किया, हमको उससे सेकंड लाइन का स्लोप भी मिल जाता है। 1 इज द स्लोप फॉर बोथ ऑफ देम। कंडीशन को याद रखिए, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। आई नीड टू फाइंड the slope of L1 is perpendicular to AB. You can see that. Now, condition को recall करिए. Those lines which are perpendicular to each other have slope, m1 into m2 equals to -1. I haven't given the points of A and B. What you should do? Find the value of m1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. 4 minus 5 is plus 5 upon -2 minus 0. The slope -9 by 2. You put it here. -9 by 2 into m2 equals to -1. m2 equals to 2 upon 9. You can see that the value of the slope of the line perpendicular to AB is 2 upon 9. You should remember, अगर दो लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर हैं तो अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप जो भी आता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल सेकंड लाइन का स्लोप हो जाता है। अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप 3/4 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -4/3 हो जाएगा। जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। Now, if I talk generally, these questions are all on the same concept. You got one line, two passing points, other line parallel है, perpendicular है, हमको उनके slopes निकालने हैं। One thing is missing in that. Basic concept को याद रखिए। The first line 0,2 -3 and -1. The second line -1,5 4,a. The slope of the first line को m1 मान लीजिए और second line को m2 मान लीजिए. These lines are parallel to each other. That means m1 equals to m2. m1 is, I'm doing it directly now, -1 -2 upon -3 -0. -3 upon -3 equals to 1. The value of m2, a minus 5 upon 4 plus 1. So you can see that this will give us a minus 5 upon 5. I need to equalize m1 equals to m2. So a minus 5 upon 5 equals to 1. A equals to 10. Concept use, अगर लाइन पैरेलल है उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे. It is as simple as that. Conceptual questions, sometimes board gives you these questions for 3 marks. You never know. So you should prepare these questions very, very carefully. The reverse question. Line passing through 4,2 and is perpendicular to the line passing through point a, 5 and 2, -1. AB का स्लोप m1 ले लीजिए और EF का स्लोप m2 ले लीजिए.
द कॉन्सेप्ट इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सो अभी हम पहले AB का स्लोप निकालते हैं। हम M1 फाइंड आउट करते हैं -3 + 2 अपॉन 2 + 4 -1 अपॉन 6। वैल्यू ऑफ M2 फाइंड आउट कर लीजिए। दैट मीन्स कि EF का स्लोप निकालिए -1 ओके 5 + 1 अपॉन A -2 6 अपॉन A -2 द स्लोप ऑफ लाइन M2। अब सोचिए अपने दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए M1 into M2 equals to -1. So -1 upon 6 into 6 upon A -2 equals to -1. 6 and 6 is cancelled. A -2 equals to 1. A equals to 3. It is as easy as that. क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं? बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं. Don't make them complicated. Solve them in an easy manner. There is no need of making questions complicated. Board does not ask you very complicated questions. It gives you a very simple and straightforward question. The question is studying distance formula without using distance formula को emphasize करिए. बोर्ड क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए. डू नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला देन, otherwise you won't get any marks out of it. Show that the points are the vertices of right angle triangle. Now there is an issue in this question. We have not been given that which point is at right angle. We do not have the vertices which is right angle. So in this case, what we should do, we should try to find slope of AB, slope of BC, slope of AC. Slope of AB 4 + 2 upon -4 -5. Slope of BC 6 - 4 upon 10 + 4 2 upon 14 1 upon 7. Slope of AC 6 + 2 upon 10 - 4 8 upon 6 gives you 4 upon 3. Now I can sense an opportunity. I can sense a concept here. The right angle triangle should be like this. That means any two lines should be perpendicular. And that means उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा. सो M1 into M2, तो किन्हीं भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. तो AB का स्लोप अगर मान ली मैंने M1 को -3/4 लिया एंड M2 को 4/3 लिया, तो M1 into M2 equals to should be equals to -1. चेक करिए. -3/4 into 4/3 gives us -1. Our triangle is right angled at A. This point is B. This point is C. AB and AC का प्रोडक्ट -1 के बराबर है. ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. Hope you understand this point. Question is not difficult. This is enough to show the triangle is a right angle triangle. वीडियो को रिपीट करके देखिएगा. अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, we are always here to assist you in that case. Next one. Again, अंडरलाइन करिए इस पॉइंट को. डिस्टेंस फॉर्मूलाज यूज नहीं करने हैं विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. A, B, C and D. Point A is 4,5. Point B is 1,2. Point C is 4,3. Point D is 7,6. इसको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस शो करना है. So we all know parallelogram. I hope that if there is a parallelogram, then AB must be parallel to DC and AD must be parallel to BC. So एक बार आप AB का स्लोप निकालिए.
एक बार आप CD का स्लोप निकालिए, एक बार BC का स्लोप निकालिए, एक बार AD का स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ AB 2 minus 5 upon 1 minus 4 minus 3 upon minus 3 gives us 1. Very easy. Slope of CD 3 minus 6 upon 4 minus 7 minus 3 upon minus 3 again gives us 1. Correct? So you can see the slopes are same for AB and CD. That means AB is parallel to DC. I'm clear with this, I guess. The slope of BC 2 minus 3 upon 1 minus 4 minus 1 upon minus 3. The slope of AD 5 minus 6 upon 4 minus 7 minus 1 upon minus 3. Oh good. तो दोनों का स्लोप कितना कितना आ गया 1 upon 3 1 upon 3. बच्चों आप देखिए ध्यान से यहाँ पर AC और AB और CD का स्लोप इक्वल आ रहा है और BC और AD का स्लोप इक्वल. That means AD and BC parallel हैं and DC and AB parallel हैं. But I always suggest that if I join diagonals here, and हम यहाँ पर ये भी शो करें कि जो diagonals हैं वो, अब एक बात समझिए यहाँ पर मेरे ध्यान से, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप ये शो करते हैं कि पॉइंट्स लाइंस अनइक्वल हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं, पर यहाँ तो आप केवल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ लाइंस के स्लोप को इक्वल शो करके ही ये शो कर सकते हैं कि वो आपस में एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है अगर उसकी दोनों लाइंस अपोजिट पेयर्स ऑफ लाइन के स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। That makes this parallelogram, this quadrilateral as the parallelogram. I hope the question is clear to you. So parallelogram, rhombus, square, rectangle. In सब में I'm writing it here. Parallelogram, rhombus, square, rectangle. इन सब में यही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। Understood? Little lengthy question it is, but I am making it up. A quadrilateral, any quadrilateral, we don't know which, and we simply take the points A, B, C, D. Please don't break the cycle of the points. जिस ऑर्डर में पॉइंट्स गिवन है उस ऑर्डर में ही उनको ABCD ज़ूम कर ली, उनको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऑर्डर चेंज नहीं करना है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ऑर्डर चेंज करेंगे आप तो आपको क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आएगा। आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। हमने यहाँ पर चारों लाइंस के मिड पॉइंट E, F, G एंड H मार्क कर दिए और एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। इसको पैरेललोग्राम शो करना है। So first step, I should find the points E, F, G, H by using the midpoint formula. So I hope you all remember the midpoint formula. I'm writing it only once. X1 plus X2 upon 2, Y1 plus Y2 upon 2, 4 minus 2, 2 upon 2, 1, 8 plus 4, 12 upon 2, 6. Point F, 10 plus 4, 14 upon 2 is 7. 7 plus 8. Now look at this. 7 plus 8 gives you 15 upon 2.
midpoint, the coordinates of point G, 11 plus 10, 21 upon 2, comma 1, and coordinates of H are 11 minus 2, 9 by 2, comma 4 plus minus 5. We got the coordinates of these midpoints of the line of the quadrilateral. Now आपको स्लोप्स फाइंड आउट करने हैं, EF का स्लोप, FG का स्लोप फाइंड करना है, GH का स्लोप फाइंड करना है एंड HE का स्लोप फाइंड आउट करना है. द पॉइंट, द फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1 का यूज करके अब 4 स्लोप निकालेंगे एंड अंडरस्टैंड EF एंड GH का स्लोप इक्वल आएगा एंड FG एंड EH का स्लोप्स इक्वल आएगा. ऐसा अगर होता है दैट मीन्स ऑपोजिट पेयर्स के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट पेयर्स के स्लोप इक्वल होने पर ये क्वाड्रिलेटरल EFGH एक पैरेललोग्राम बन जाएगा एंड वी कैन से दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. That is what the question are asking to prove us. Not very important question as such. We have lot to come in a straight line chapter, but I'm solving it all for you. My suggestion, you must not leave any question just for the sake that it is not important. Or somebody tells you कि question important नहीं है, इसको छोड़ दीजिए. Do not do it. Board keep on surprising. Board हमेशा question में एक surprising question डालता है. आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है. Now this question is a very good question for 3 mark. I got the points P, Q, R to show them collinear. I told you in the second video I discussed about that. I should find out slope of PQ and the slope of QR, or I can find slope of PR as well. And if these slopes comes out to be equal, the points are collinear. So slope of PQ, C plus A minus B minus C upon B minus A. This C is cancelled. A minus B upon B minus A. Take out minus 1 common. The slope of PQ is minus 1. The slope of QR A plus B minus C minus A upon C minus B. This A and A is cancelled. Take out minus 1 common. Value of QR is minus 1. What you can see here, PQ and QR have same slope, and on that the Q point is common between these two. That means P, Q and R has to be collinear point. So the concept behind this question, अगर आपको 3 पॉइंट्स की collinearity शो करनी है तो आप उनके स्लोप्स निकालिए पेयर वाइज, और अगर स्लोप इक्वल आते हैं पॉइंट्स कैन बी सेड टू बी सिमिलर. The 12th question is an easier one. Find x slope of the line joining x comma 2 and 8 comma minus 11 is 3 by 4. So minus 11 minus 2 upon 8 minus x equals to minus 3 by 4. Minus 13 upon 8 minus x is equals to minus 3 by 4. That gives you 24 minus 3x equals to 50.
2 and 3x equals to 52 minus 20. Please solve it further on. Not going into details of solving it. I think 8 and 28 something, x equals to minus 28 by 3. That gives you the value of x. Ultimately, the question is very simple that हम slope निकालेंगे और उसको minus 3 by 4 के equal put कर देंगे. Now, this question is good question. I've never seen this question in the board exam yet, ever, but they're good question to understand. You must have idea of these kind of questions. A little conceptual questions, kind of. What is the concept here? हमको पता है कि AB line in this question, AB line is parallel to x-axis. This is x-axis. So they are saying here that line AB is parallel to. कितनों को ये मालूम है कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे और वो 0 0 होंगे. दैट मींस AB लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा राइट अवे. स्लोप ऑफ m equals to 0. You come on to this CA. This is the equilateral triangle. All angles are 60, 60 and 60. I make it a little bigger question. Bigger triangle, I mean. So take it as like this. This is 60 degree and this is 60 degree. This is x-axis and this is y-axis. What you can see here that जो AC line है उसका जो inclination है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट है. स्लोप इज पॉजिटिव. करेक्ट. For line BC now, there was a point in the previous video that अगर लाइन का स्लोप एक्यूट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा. So for the second line BC, m equals to minus tan 60. So for BC, slope is minus root 3. For AC, slope is positive root 3. For this line, slope is 0. I hope you understand these questions. These questions are simple. Now, if you see further questions, they all are of the same category. We generally have the questions in this is a lengthy exercise. I am giving you 2-3 more solutions of this. I expect that you try to solve these questions on your own. Let me solve this question for you. A good question it is. I should make a triangle first of all. So point A is 5,4. Point B is हम हर चैप्टर के बाद एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो भी पोस्ट करेंगे जो कि आपको एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 इयर्स के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे. उसके अंदर आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा उसके अंदर और हम आपको उसमें एक असाइनमेंट का लिंक भी प्रोवाइड करवाएंगे. यू कैन यूज दैट असाइनमेंट फॉर योर प्रैक्टिस. They're asking the altitude of AB. Altitude means perpendicular from C point on AB. So AB का slope M निकाल लीजिए पहले. -2 -4 अपॉन -3 -5 और फिर आप देख रहे हैं यहां पर कि ये परपेंडिकुलर है AB के तो ये M1 है. सो आई हैव M1 M2 इक्वल्स टू -1.
this will gives us -6 -8, that is 3/4. By now you know that जो लाइंस परपेंडिकुलर हैं उनके स्लोप के प्रोडक्ट्स आर द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये एक पॉइंट याद रखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। सो 3/4 into m2 equals to -1, m2 equals to -4/3. So here the answer is 4/3 for the first line. I hope you understand the second part. The slope of median AD. So now let me clean this a little bit. So I need to find the median AD. Now first of all, in your mind, think what is median. So median एक ऐसी लाइन होती है जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को अपोजिट बेस के मिड पॉइंट पर कनेक्ट करती है। सो डी पॉइंट क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा। ए पॉइंट कितना है, 5,4। आपको क्या करना है, पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। डी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। -3 + 1/2 -2 -8/2. That gives us -2/2 -1, -5. I have the coordinates of point D. AD का स्लोप निकाल लीजिए। 4 + 5/5 + 1 9/6 3/2. Is that simple? आपको आपके पास स्लोप निकालने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्लोप निकालने के लिए? या तो उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स हों, वी कैन फाइंड दैट, या वो लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो, या वो लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो। कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए दैट विल हेल्प अस टू फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। सो इन द फर्स्ट केस वी हैड लाइन पैरेलल टू AB, परपेंडिकुलर टू AB, एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर। मैंने AB का स्लोप निकाला और M1 M2 यूज किया, मेरे पास एल्टीट्यूड का स्लोप आ गया। यहाँ पर ये क्या है, एक मीडियन है। मैंने BC का मिड पॉइंट निकाल लिया, बिकॉज लाइन A से BC के मिड पॉइंट पर आएगी। मेरे पास AD के दो एंड पॉइंट्स होगा, मैंने स्लोप निकाल लिया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। सो लेट अस क्लियर इट वंस अगेन। बताइए थर्ड पॉइंट में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, या तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, जरा आप सोचिए। हमको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हमको गिवन है कि हमको गिवन क्या है कि यहां पर जो थर्ड लाइन है वो स्लोप लाइन पैरेलल टू AC। AC के पैरेलल लाइन है, कहीं भी जाएगी, चाहे ये कोई भी हो, ये सब AC के पैरेलल लाइन है। स्लोप कैसे होंगे इन सब के? इक्वल टू स्लोप ऑफ AC होंगे। AC का स्लोप निकालिए, -8 -4/1 -5 -12 -4 इक्वल टू 3। इसका स्लोप 3 आ गया। इन सब का स्लोप 3 3 3 3, कहीं से लाइन में जाएगी, अगर वो AC के पैरेलल है स्लोप 3 होगा। M equals to 3. This was, I forget this. So that is how the difference in finding the slope. कॉन्सेप्ट को याद रखिए, हमारे पास गिवन लाइन के कोई एक लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या पैरेलल होनी चाहिए, या उस गिवन लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों एंड पॉइंट्स हैं, आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर लाइन किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो M1 M2 इक्वल टू -1। अगर गिवन लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो M1 इक्वल्स टू M2 करके आप उनके स्लोप्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट?
I take this question like we got a line PQ parallel to RS. Slope of M is for this for PQ. For RS, K minus 1 upon 10 minus 8. K minus 1 upon 2. Because lines are parallel, so इसको आप M2 assume कर सकते हैं और इसको M1 हमेशा M1 M2 की मार्किंग करिए 2 equals to K minus 1 by 2, K minus 1 equals to 4, K equals to 5. Simple question is this. So that gives me the value of K. Second part and third part बिल्कुल ऐसे ही आपको solve करने हैं. I can solve one more question quickly before ending this video. I hope आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आई हैं. हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करी है. The next video will be regarding the concept of x-intercept and y-intercept and the concept of types of equations. Then I will solve the further questions of a straight line. Like this question, points are collinear, so take it as A and B and C. स्लोप ऑफ ए बी निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी निकालिए, -4 -3 अपॉन 2 माइनस के, -2 अपॉन -4 माइनस के प्लस 1 -2. दिस इज -2 प्लस 4 माइनस के -1 2 अपॉन minus k minus 1 or -2 upon k minus 1. This is the value of M2. This is the value of M1. Points are collinear. That means AB का slope और BC का slope आपस में equal होंगे. So find the slope, the value of slope of M1 -7 upon 2 minus k. Make it simple. 7 upon k minus 2. Equalize them. 7 upon k minus 2 equals to -2 upon k minus 1. इनको simplify करिए और यहाँ से k की value निकाल लीजिए. The concept behind, if the points are collinear, then the slope of those points in pair will always be equal. I hope it is clear to you all. All these points I'm leaving questions for you for your practice. Solve these questions in your practice. एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है एंड आपको क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं. व्हाट एल्स डू यू वांट इन दिस? सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लेट अस नो what else do you want from us in helping you to prepare for ICSE 10th exams for your mathematics. Very soon we'll be posting videos for physics as well. Thank you very much. See you in the next video.